also we discussed the results found from that experiment, and let's recall the what are the results we found in the previous class, and in this today's class we will analyze in detail. Okay. So what is photoelectric effect? Let's do recap. That is, when light of sufficiently small wavelength is incident on a metal surface, electrons are ejected from the metal. This phenomenon is called photoelectric effect. Okay. That means when the light, that is maybe visible light, maybe ultraviolet radiation, maybe X-rays, okay, of small wavelength. That means small wavelength means high frequency. Okay, high frequency. Okay, so suitable frequency, this light should have a suitable frequency. So when it light of suitable frequency is struck on a metal surface, then electrons will be emitted from that metal surface, and this phenomenon is called photoelectric effect, isn't it? So, and we discussed about the results found from these experiments, okay, from this experiment, and first result we found that what is the effect of incident radiation on photoelectric current. Radiation photoelectric current upare incident radiation ro kon effect. That means we first kept that frequency of incident radiation constant and the potential difference constant. First कौन constant रखिले ना frequency को constant रखिले और potential difference को constant रखी कि हमें vary कहाँ कोले ना intensity को vary कले. Okay, intensity को हम थोड़ा vary करा गला. When the intensity of incident radiation is varied, then it was seen that the photocurrent varies linearly with the intensity of light. तमाने लाइट जिते इंटेंस हबो जिते तार इंटेंसिटी अधिक हबो सेते फोटो इलेक्ट्रॉन्स गुडा के एमिट हेबे एंड फोटो करंट प्रोड्यूस हबो. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स व्हाट? सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन. सी, फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन, ए गोटे वर्ड को हमें we can blend, this is the blending word. Okay, so we can separate this word into these words, that is photon plus electron. That means photon, light ro photon padiba metal surface upare, electrons baharibo. Okay, photon padibo, electrons baharibo. Misai dela combining these two words, we will get the one word, that is photoelectric. Okay, the simple meaning. So here, when the frequency and potential difference was kept constant and intensity was varied, then it was seen that photocurrent or photoelectric current varies linearly with the intensity of light. That means more will be the intensity, more will be the intensity, more will be the electrons emitted from the metal surface, and more will be the current. Clear? ता माने मते को 50 वाट रे अधिक करंट प्रोड्यूस होबो ना 100 वाट रे अधिक करंट प्रोड्यूस होबो. ऑब्वियसली 100 वाट रे अधिक करंट प्रोड्यूस होबो. क्लियर? बुझियला इन सोडा कांसेप्ट. ओके, ए कांसेप्ट हम क्लियर. सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is proportional to the intensity of the incident radiation. It was discussed in the yesterday's class. Okay, so it was also discussed in the yesterday's class, that is what is the effect of potential difference on the photoelectric current. Current photo current upare intensity कोन देखिले हमें, तापर देखिबा potential difference रे कोन effect पडुची. सो हम एठे हम कोन करिबा, सेठी हम frequency आउ potential difference constant रखि कि intensity को vary करथिले. ओके, बर्तन एठी कोन करिबा ना कोन constant रखिबा ना frequency तो already constant अछि, बर्तन intensity को constant रखिबा. So frequency intensity would be constant and the potential difference will be varied. Potential difference को vary करा जिवो. Okay, then what we will see? We will see that, see, we will say that when potential difference is varied, that means एतबले हमें positive potential दबा. देखो एतबले ए जो एपटे कोन अछि, anode रे हम connected हेछि positive potential. Okay, positive potential is given to the anode and negative terminal is connected to the cathode. Okay, so is a positive potential da is a positive potential da ko hame badhai daba. When it is further increased, we will see that more electrons will be emitted and photocurrent will be produced more.
ओके सो फोटो करंट विल बी इंक्रीज फोटो करंट भी कौन हम इंक्रीज हम देख आज जिते तुम कलेक्टर पोटेंशियल टाक बढ़ाऊे सी कौन हो आस्ते 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 बढ़ुची कि नहीं फोटो करंट इंक्रीज हो बट इंक्रीज है कौन हम आस्ते आस्ते इंक्रीज है गोटे मैक्सिमम वैल्यू रे पहुंची इट विल रीच एट ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज called what? That maximum value is called saturation current. I have already said that. Okay, saturation current. Okay, तो ये saturation current जितने में suppose negative potential देवा ये देखो जी positive potential पाई कारण positive axis रे ड्रॉ कराई छी. Okay, देखो ये पड़े this is the negative x axis. When negative potential is applied to the anode, see. जदि आम बर्तन एठी नेगेटिव एठी बर्तन पॉजिटिव हो जिवो दैट मीन्स द बैटरी विल बी लाइक दिस इज अ बिग लाइन दिस इज स्मॉल लाइन ओके सो जेतबेले नेगेटिव टा एनोड सहित कनेक्टेड हबो आ पॉजिटिव टा कैथोड सहित कनेक्टेड हबो सेतबेले कोन हबो नेगेटिव जेहेतु कनेक्टेड होइछ एनोड सहित त इलेक्ट्रॉन सोडा एठु बाहरी वर्तमान आ एठु ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सोडा को बाहर छंदी इजंट इट तो जते हठात आम नेगेटिव पोटेंशियल दे देबा एठी सडनली इलेक्ट्रॉन सोडा को स्टॉप हे जीवनी आसीबा स्टॉप हे जीवनी कि करंट ता सडनली स्टॉप हमर हबो नाही ओके विल नॉट स्टॉप इमीडिएटली फोटो करंट विल नॉट स्टॉप इमीडिएटली ओके सो इट ग्रेजुअली देखो इट ग्रेजुअली डिक्रीज हेची isn't it देखो ग्रेजुअली when negative potential is applied the current gradually decreases and finally comes to zero. At a certain particular value, the photo current is completely stopped. Photo current is zero. Okay, and so that potential which stops the photo current is called stopping potential or cutoff potential. Here it is written cutoff potential or stopping. So applying the retarding means negative potential. Retarding potential or negative potential जेतबेले आमे दबा जेतबेले फोटो करंट ता पूरा स्टॉप हे जीवो पूरा जीरो हे जीवो and that potential is called stopping potential or cutoff potential. Stop माने बुझी परछो फोटो करंट ता स्टॉप हबो हला को पोटेंशियल ले ना जो पोटेंशियल फोटो करंट स्टॉप हबो सेही पोटेंशियल को हमें कहबा स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर ओके सो से जिनसटा को हमें आउट के एनालाइज करबा आउट डीपली एनालाइज करबा ओके सो हाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स it is very important एको हमें भलो भाबरे बुझिबा ओके सो स्टॉपिंग पोटेंशियल हाउ इट इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ता माने जो पोटेंशियल ताको दिया हला स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पोटेंशियल ले करंट जीरो हो जाउची ताहारो ता से रिलेटेड के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाउ इट इज रिलेटेड सी सपोज हियर electrons are coming from the cathode to anode surface when the cathode is connected to the negative terminal of the battery, isn't it? That means to stop the current current केतेबेले स्टॉप हबो एतेबेले इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा बंद हे जिवो बुझियो छी कि नै द इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा बंद हे जिवो सेतेबेले करंट स्टॉप हे जिवो so to stop the current we must ensure that even the fastest electron just fails to reach the anode बुझी पारछ कोन कहूची जते माने हमें केतेबेले जानिबा जे फोटो करंट जीरो हबो करंट जीरो हो बोली एतेबेले इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा बंद हबो तामाने हमें देखिबा माने सबुठो फास्ट जाउतबा इलेक्ट्रॉन भी एनोड पाखरे पहुंची परिबो नाही कोठु कैथोड रो एनोड पाखरे जो कैथोड रो बाहर की एनोड पाखरे पहुंचुचंती इलेक्ट्रॉन गुड़ाक सबुठु अधिक स्पीड रे जाउथिबा इलेक्ट्रॉन भी एनोड पाखरे पहुंची परिबो नाही सेतेबेले आमे जानिबा इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप हला आ फोटो करंट हमरो जीरो हो जिवो करंट आउ डिफ्लेक्शन आउ देखेबो नाही बुझियला सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड फ्रॉम द एनोड दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक रिपेल हेबे केतेबेले रिपेल हेबे एतेबेले एठी नेगेटिव दिया हैछि आ एठी पॉजिटिव दिया हैछि ना नहीं एतेबेले एठी नेगेटिव आ एठी पॉजिटिव दिया हैछि कनेक्टेड हैछि दैट मीन्स एठी एपटे इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक इलेक्ट्रॉन से एपटे फ्लो करिवे एनोड रु
बुझिले कि नहीं. So but एपटे भी electrons गुड़ाक आसुचंदी when light falls on the metal surface. Okay, so these electrons will be repelled from the electrons coming from the anode. Electrons जो so these electrons will be repulsion होबो तांका भितरे और gradually current decrease हे zero होबो. Okay, so हमें prove करिवार अछि even the fastest electron fails to reach the anode. केमिति होची तार फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन माने कोन तार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करूची. फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करियो माने कोन तार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होबो. सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी that kinetic energy is equal to half mv square, half mv square, half mv maximum square, kinetic energy maximum. So ता माने maximum velocity रे से electron move करतबो बुझले कि नहीं. So let's suppose the anode is kept at a negative potential. anode को negative potential दिया है. suppose magnitude v naught, a v naught magnitude में ताको potential दिया है with respect to the cathode as a photon, as a okay, let me set. So suppose the anode is kept at a negative potential of magnitude V naught with respect to the cathode as a photoelectron travels from the cathode to the anode, the potential energy, see the potential energy increases by EV naught. Potential energy केता हबो देखो इलेक्ट्रॉन ता जाउची, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करूची ता माने ता द्वारा किछि वर्क डन होची, isn't it? ता द्वारा किछि वर्क डन होची. We know that work done W is equal to Q into V, charge into potential difference, charge into potential difference, isn't it? Here the electron is moving. Okay, that means we will write that electron ro charge into potential difference. Potential difference kete दिया है? Potential दिया है V naught, so EV naught, and that work done is stored as potential energy. So that is equal to U. So what is the potential energy of electron? That is U is equal to EV naught. बुझिला कि नहीं? EV naught. So EV naught potential energy तारो बॉडी जाउची. बुझिला कि नहीं? So this is equal to the decrease in the kinetic energy of the photoelectron. Decrease in the kinetic energy of the photoelectron. देखो potential energy बॉडी जाउची अतः तार opposition repulsion होउची ए electrons द्वारा कोठी जो anode रो electrons उडा बाहर चंदी electrons सेठू electrons are not emitted but as it is connected to the negative terminal of the battery. Okay, so from that these electrons from the cathode surface coming from the cathode surface will be repelled by the anode. Anode that is repulsion में और तांको उडा opposition force मिली गला, opposing pushing force उडा मिल जाउची तो एमाने जोर स्पीड रे जाउछंदी तो तांको कोन पोटेंशियल एनर्जी तांको मिल जाउची तो आस्ते आस्ते मन काइनेटिक एनर्जी कोन हबो decrease habo. Suppose for example I am going from this point to this point. Okay, I am going from, suppose I have to go from this point to this point मते जिबार अछि ताले मु कोन करे बहुत स्पीड रे गति करबी. ओके, बहुत स्पीड रे मूव करबी बट सेपटे मते ओटे पुशिंग फोर्स मिलिबो, सेपटे मते ओटे पुशिंग फोर्स मिलिबो तो मोर अपोजिशन डाकू माने मोर जो वेलोसिटी को सब बेले कोन करबो अपोज करबो. ओके, गोटे पुश हम पुशिंग फोर्स जहाँ द्वारा कि मोर वेलोसिटी मु जो काइनेटिक एनर्जी रे मूव करूथली सेटा मोर डाउन हबो, आस्ते आस्ते ब्रेक डाउन हबो. सो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन हे ग्रेजुअली सेटा कोन हे जिवो जीरो हे जिवो. ओके, तो आस्ते आस्ते कोन त अपोज करबो ताले एपटू आसी पोटेंशियल एनर्जी जरा कि बड़ी जाउची एपट मोर काइनेटिक एनर्जी आस्ते आस्ते कोन हे जिवो काइनेटिक एनर्जी आस्ते आस्ते मोर डिक्रीज होबा आरंभ करबो. ताले मु को वेलोसिटी रे मूव करबी मोर काइनेटिक एनर्जी रे मु जाउची पोटेंशियल एनर्जी सेपटू आसुची पोटेंशियल एनर्जी मते अपोज करूची ताले मोर को एनर्जी रे मु मूव करबी दैट मीन्स आई विल मूव दैट इन k maximum kinetic energy minus potential energy. सो एते के एनर्जी रे मु ए पॉइंट रू ए पॉइंट को पहुंचबी बुझिला कि नै. बट व्हेन आई कैन नॉट रीच एट दैट पॉइंट मु ए पॉइंट रे केते बळी पहुंची परिबिनी
ना जितेबाला मोर काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी तो इक्वल हो सामान हो से जो पुशिंग फोर्स मत मिलूँ आएपटू मुझे जाऊँगी तो से जो फोर्सटा इक्वल हो तो मत मुझे पॉइंट रे पहुँची पारि ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मु ए पॉइंट रो ए पॉइंट जिबा भितरे मतलब बार बार खाली अपोजिंग फोर्स मिलियो तले मोर वेलोसिटी डाउन हबो मो काइनेटिक एनर्जी डाउन हबो आ मु से पॉइंट रे पहुंची परिबी नहीं। आई विल फेल टू रीच दैट पॉइंट। ओके व्हेन माय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो केते बड़ हबो व्हेन दिस विल बी इक्वल टू 0 this will be equal to 0 it implies that K maximum is equal to K maximum is equal to EV naught. That means maximum kinetic energy is equal to the potential energy is equal to the, that means stopping potential here. Okay. So similar jemti moti more example deli similarly similar things happened with the electron modha sei bhaliya electrons these electrons will be repelled by the anode so that their kinetic energy will decrease semanankar jo force jo energy semane agu jauthibe tankar energy ta down hobo. Okay, so down when it cannot reach the anode केतेबेले से एनोड रे पहुंची पारिबेनी ना जेतेबेले तांकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जेतेबेले इक्वल हे जिवो बुझियला तो सेतेबेले सन पहुंची पारिबे नाही. सो दैट मीन्स फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स EV naught is equal to what is the maximum kinetic energy, that is half mv square. So half mv square, that is the v is the velocity of the electron, m is the mass of the electron. Okay. So that means from this equation it बुझीगला पहले. So if the fastest electron just fails to reach the anode we should have K maximum minus EV naught is equal to 0. So K maximum is equal to EV naught. बुझीगला. So ए equation रो हमें कौन ऑब्जर्व करछंदी, that means a stopping potential is proportional to the velocity of the term depends upon the velocity of the electron. नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल टा कहाँ पर डिपेंड करछि, पोटेंशियल टा स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करछि और जेतु मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके सो जेते की वेलोसिटी जेते बढ़िबो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल सेते बढ़िबो और तार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मध्ये सेते अधिक हबो. बुझियला. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, then what is the results? Yes, the stopping potential depends upon the velocity of the fastest electron. Okay, and yes, then from this graph what we found the results that the saturation currents are proportional to the intensities of radiation. नहीं देखो saturation current of saturation, then okay just okay I have to say that these experiments first I1 intensity नहीं करा जाइतिला, first कौन I1 intensity आउ frequency नहीं की हमको experiment करा गला देखा गला result. Then this experiment was repeated for different intensities, that means higher intensities, that is I2 I3 ए भला निया गला. That means I3 is greater than I2 is greater than I1. So different first I1 intensity constant intensity नहीं कि frequency constant रखी के potential difference को वेरी करके देखा गला. तापर पुणी again I2 निया गला तापर I3 निया गला एवं different intensities निया गला. So देखा गला जे समस्त को पाइंस पुणी saturation current भी देखा गला. ओके तो देखा गला saturation current इतने intensity अधिक होउची so saturation current भी हमारा अधिक हो. देखो I1 पे saturation current is this one, for I2 पे this one, for I3 पे this one. Okay, आस्ते आस्ते लेवल द्वारा बढ़ुची. So that means saturation currents are proportional to the intensities of the radiation. हला incident radiation रो intensity जितने अधिक होउची saturation current अधिक होउची. Okay, but the stopping potential remains the same. Stopping potential केन देखो stopping potential समस्त सब intensities पे समान आसी, that is 0. Are you getting? देखो intensity जितने बढ़िले भी पोटेंशियल पर किछि असुविधा करूछि कि पोटेंशियल किछि हार्म करूछि कि नाही. पोटेंशियल
is independent of the intensity. So potential does not depend upon the intensity. Intensity पर depend ही करू नहीं. Okay, ताले से कहाँ ऊपर depend करूची ना frequency ऊपर depend करूची बुझियला कारण सबु intensity पाई potential केते 0. So the stopping potential remains the same for all intensities. सबु intensity पाई frequency potential केते same. So thus what is the conclusion? For a given frequency, when frequency would be constant, then the of the incident radiation, the stopping potential is independent of the intensity. Is a very important line you should remember. Okay, so stopping potential depends upon what? Only frequency or wavelength you can say, okay, not on the intensity of light. Okay. So next कौन करागला? Next effect of frequency of incident radiation on stopping potential. तापर हमें देखिए stopping potential ऊपर frequency का कौन relation. देखो we know that हमें जानिले कौन the stopping potential depends upon frequency पर depend करूँगी. Okay. तापर से तिपे एपटे कौन देखो different frequency नहीं आगला. That is higher frequency. That means nu3 greater than nu2 greater than nu1. Frequency different माने higher frequency नहीं आगला. That means गोटे suppose तीनटा frequency different माने कौन colors different. Suppose blue, indigo आने वाला yellow. VIBGYOR VIBGYOR. So VIB blue, indigo और violet suppose violet नहीं आगला. Then ए तीनटा colors पाई नहीं आगला. तब मैंने एमकान एमानंकर frequency सबुठो अधिक ना नहीं. तो ए फ्रीक्वेंसी गुड़ा ने आगे देखा गला तीनटा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सपोज ने गला देखि देख सिमिलरली रिटार्डिंग पोटेंशियल तंग देखा गला जे से भी मध्य अधिक होउची. सो फ्रीक्वेंसी बढ़िले रिटार्डिंग पोटेंशियल भी अधिक होउची. ता माने V03 also greater than V02 also greater than V03 ए V01. ओके देखो ए ग्राफ तुम देखि परतो भलो भाबरे देखो nu3 greater than nu2 greater than nu1 सिमिलरली आस्ते आस्ते रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बढ़ी जाउछि बुझियला. सो एठो हमें पूरा क्लियरली हमें पाई गेले जे पोटेंशियल द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. देखो इंटेंसिटी सहित किछि यार फरक ही नहीं. इंटेंसिटी ऊपर जमा डिपेंड ही करू नहीं. इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द intensity but depends upon frequency. So when you plot a graph that is between stopping potential and frequency, तो देखा गला stopping potential और frequency तो graph नहीं गला. It was seen that the stopping potential varies linearly. हाला linearly कोड straight line graph आसिला हमरो. The stopping potential varies linearly with the frequency of light. That means when frequency will be increased, stopping potential will be increased. Stopping potential is nothing but what? Maximum kinetic energy. मैं पढ़िले. The K maximum is equal to EV naught. Okay, so stopping potential is nothing but what? Maximum kinetic energy. Okay. Then what is the result we found? That the maximum kinetic energy of the photoelectrons varies linearly with the frequency of the incident radiation. But it is independent of its intensity. बुझियला? Stopping potential जहाँ. So we know that stopping potential is equal to K maximum. Okay. Then the stopping potential frequency पर depend करूची. So maximum kinetic energy भी कहाँ पर depend करूची? Frequency पर depend करूची. That means it varies linearly. हम देखिले पे straight line graph आसी. But कहाँ पर independent? ना intensity पर intensity पर depend करू नहीं. Okay. So from the second figure at a frequency nu naught, the value of the stopping potential is 0. देखो ये figure रे. ये figure रे देखो nu naught. It would like a point को मार्क करो. So this is the nu naught. A nu naught को कहा जाए हमारा threshold frequency. A nu naught रे हमारा at the value of frequency nu naught, the value of the stopping potential is 0. Nu naught पर्यंत value केते stopping potential केते 0. से पर्यंत 0. So this frequency is known as threshold frequency. से जो nu naught को हमें कौन कहबा threshold frequency. ए frequency पारो हेले हमरो इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा स्टार्ट हबो. So this the photoelectric effect occurs above this frequency and ceases below it. Ceases means stop. Ceases means stops. माने
बंद हो बिलो ए थ्रेशोल्ड सपोज गोटे थ्रेशोल्ड पड़ ना थाए तुम देखिबो तुम द्वार घर द्वार मुहर गोटे एरुंडी बंध थ्रेशोल्ड माने एरुंडी बंध हैला सो एरुंडी बंध आमे क्रॉस करले ही आमे बाहर को जीवा देखो एरुंडी बंध आमे क्रॉस न करिसेंती आमे से रूम भीतर ही रहइबा ओके सो एरुंडी बंध क्रॉस करले ही आमे बाहर को जाई परिबा सो दैट्स व्हाई सिमिलरली आमर इलेक्ट्रॉन्स एमिशन विल हैपन व्हेन इट विल क्रॉस द threshold frequency. So above the threshold frequency electron wave emission will happen and below the threshold frequency it will not be emitted. That means stops photoelectric emission stops below it. Okay, so therefore threshold frequency is different than what is threshold frequency. The threshold frequency means it is as a minimum frequency of the incident radiation below which the photoelectric emission is not possible completely, however high the intensity of radiation may be. जेते अधिक इंटेंसिटी हो पछे के सपोज हम जेते लाइट एबे लागि जे हम पाठ पढा होउची हमर हम जेते आहुरी पूरा गोटे हालोजन लाइट आनी लगे दबा हला जेते अधिक लाइट लगे देले भी हमर कौन जेपर्यंत तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आसीनी से पर्यंत इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो नै तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रु क्रॉस करिवो तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा स्टार्ट करिवो बुझियला तो तार गोटे जेते मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो व्हिच photoelectric emission is not possible and above this threshold frequency photoelectric effect is possible. Okay, will happen and threshold frequency is different for different metals. Different metal पे different हबो देखो इठी सपोज इठी गोटे मेटल A निया हेची इठी मेटल B देखो मेटल A पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कोउट बळे आसी न्यून अल्प जगह रे अल्प एति की पात्र आसी तार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देन अबव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हेची इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा स्टार्ट हेची बुझी परछि कि नै देन ग्राफ ता देखो लिनियरली वेरी करछि बुझिला ता किंतु मेटल B पे देखो एति की बट जाय मेटल B पे एति की बट जाय थ्रेशोल्ड न्यू नॉट डैश एति बट जाय थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एते बट जाय कि क्रॉस करला परे इलेक्ट्रॉन एमिशन हबा स्टार्ट हबो आर यू गेटिंग सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स सो वी हैव टू टेक सुटेबल metal for the electron emission. Then it is very important, that is what is the Einstein's photoelectric equation. ताले ये जो इतने सब स्टडी कले सेतिर हम आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन टा हमको देले कौन से जो रिजल्ट रू हमको इक्वेशन कौन बाहरला दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन when a photon of energy h nu is incident on a metal surface, the energy is used up in two ways. What are the two ways? First part, जो energy हमर को केते energy h nu is equal to h nu. So जो metal surface ऊपरे जो मेटल सरफेस ऊपर हमर जो एनर्जी h nu पड़िला ओके सेही h nu टा मेटल सरफेस ऊपर जो पड़िला सेटा केतेरा भाग रे माने यूज होउची ना यूज्ड अप इन टू वेज. हाउ मेनी वेज? इन टू वेज. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? ए पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एंड दिस एनर्जी W is spent in releasing the photoelectron is known as work function of the metal. We have already studied what is work function. That is the minimum energy required for the minimum energy required from the to escape the electron from the metal. केते energy दरकार से metal को जादर के electron emission हेई परिबो सेही metal surface रु बुझिया लागि नै ताहाले एठी कोन त माने केते h nu टा गोटे पार्ट एठी कोन यूज होउची ना work function that is phi or phi not जा भी हम लिखि परिबा तमन जे इलेक्ट्रॉन्स गुडा बाहरिबा पई जस्ट फॉर द कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस h nu इज यूज्ड ओके आ गोटे पार्ट कोन यूज होची द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज दैट? काइनेटिक एनर्जी टू द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन. ओके आउ जति रहला बर्तन खाली कोन इलेक्ट्रॉन ना मेटल सरफेस रु बाहरी गले हे जिवो कि नाही ताको कैथोड रु एनोड पाखरे पहुंचीबार अछि केमिति पहुंचबो विथ द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तार काइनेटिक एनर्जी हेले ही तो पहुंची परिबो ना बुझी परछ नै मते ए पॉइंट रु ए पॉइंट को जिबार अछि देन आई विल मूव विथ द वेलोसिटी दैट मींस आई शुड हैव काइनेटिक एनर्जी. ओके बट सेठी जे पढिले हम पोटेंशियल एनर्जी ब्रेक करूची माने कोन पोटेंशियल एनर्जी इज विदाउट एक्सेलरेशन ओके बट काइनेटिक एनर्जी मींस विथ एक्सेलरेशन वी हैव टू मूव. ओके वी शुड हैव वेलोसिटी
Okay, so that means h nu is used as electron emission from the metal surface, that means war function out of electron move karibo velocity re move v velocity re move karibo, that means it should have kinetic energy. Okay, so jo h nu, suppose this is a metals are metal and h nu energy is will fall on the, when it will fall on the metal surface, फास्ट एनर्जी तार कोथरे यूज हबो ना मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन्स गुडा को बाहरिबा पई, जस्ट खाली बाहरिबा पई फास्ट यूज हबो. तापर सपोज एई पॉइंट रे पहुंचीबार अछि ताले एमान को आ कुछ एनर्जी जो थिबो से ताकू एई पॉइंट रे पहुंचेबो, दैट इट इज यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी. बुझियला. सो h nu, that is energy of the incident photon, h nu E is equal to war function W plus kinetic energy of the electron, that is h nu is equal to, we can write phi or phi naught war function and kinetic energy, or K maximum, that is maximum kinetic energy. So this equation is called our Einstein's photoelectric equation. It is very important. Okay, so you should remember. Then what is K maximum? So K maximum is equal to h nu minus phi naught, that means phi naught means war function. Okay, ताले कितने एनर्जी रे, in how much energy, with how much energy electron will move from cathode to anode, that means h nu minus phi naught energy रे एति की maximum kinetic energy रे electron move करिबो from cathode ru anode को. बुझियला. Clear? So this is the, then what is threshold wavelength and threshold frequency? Threshold wavelength or threshold frequency ताको हमें कौन बाहर करिबा, mathematical expression बाहर करिबा. Okay, when photoelectric emission takes place, that is very important. When photoelectric emission takes place, in which frequency? See, that is K maximum is equal to h nu minus phi naught. A formula मन रहिले. Again I will write here, that is K maximum is equal to h nu minus phi naught. Okay, K maximum is equal to h nu minus phi naught. ठीक है. So that means, see here, suppose when nu is equal to, यदि मु nu को लिखि देबी, nu is equal to phi naught by h, and nu is equal to nu naught is equal to phi naught by h, put कर देबी, then what will happen to K max? भलो भाव देखो, सपोज मु ये न्यू जगह रे न्यू जर लिखिबी न्यू नॉट, न्यू जगह को रिप्रेजेंट केमते करिबी, न्यू नॉट हिसाब रे रिप्रेजेंट करिबी, एंड दैट इज इक्वल टू फाइ नॉट बाय एच लिखि देबी. ताले K मैक्सिमम केते हि जिवो देखो. सो K मैक्सिमम विल बी इक्वल टू h, न्यू जगह केते लिखिबी फाइ नॉट बाय h माइनस केते अछि फाइ नॉट, h कैंसल, फाइ नॉट माइनस फाइ नॉट केते गेला 0. So K maximum will be 0. That means maximum kinetic energy is 0. तमाने kinetic energy 0 हो जो माने इलेक्ट्रॉन्स खाली मेटल सरफेस रे खाली जस्ट बाहरिबो आ पहुंची परिबोनी. बुझियो छ नै, जतो एनर्जी पड़िबो, h nu एनर्जी पड़िबो मेटल सरफेस ऊपर तो वार फंक्शन द्वारा खाली जस्ट वार फंक्शन द्वारा खाली जस्ट मेटल सरफेस रे इलेक्ट्रॉन टा को बाहरी जीवो. बट ए सर ए पॉइंट रे पहुंची परिबो कि नहीं, पहुंच परिबोनी, बिकॉज़ kinetic energy 0, maximum kinetic energy 0. So an electron just come out from the metal surface. बुझिबला कि नहीं. ताले यदि when nu is equal to nu naught, तो nu naught means that is threshold frequency. तबले nu naught हम कहा को रिप्रेजेंट करछन, phi naught by h, phi naught by h को हमें कहिबा कोन nu naught. Okay, तमाने when nu is equal to nu naught, K maximum 0,
ताले केतेबेले फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन केतेबेले इलेक्ट्रॉन टा पहुंची परिबो व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट ओके इट इज वेरी सिंपल दैट इज व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट that means electron can reach from the cathode to anode बुझियला so when the photoelectric emission takes place that is when nu greater than nu naught yes photoelectric effect takes place that is very important photoelectric effect takes place only if lambda less than is equal to lambda naught that means nu less than equal to nu greater than equal to nu naught we know that nu is equal to c by lambda ए भला रे मन रखियो प्ले so when nu greater than is equal to nu naught and lambda less than is equal to lambda naught in that case photoelectric effect takes place है नहीं जितेबाला न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट होची इलेक्ट्रॉन खाली जस्ट बाहरी आसुन माने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होची बट पहुंचबे केतेबाले व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट ओके सो व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट और लैम्बडा लेस देन इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट देन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हबो मन रहिला केते व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस व्हेन न्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू न्यू नॉट or nu in terms of frequency in terms of wavelength lambda less than equal to lambda naught okay setebale photoelectric emission hei paribo then what is nu naught that is threshold frequency nu naught corresponding nu naught is threshold frequency okay and then what is the lambda naught this lambda naught is called threshold wavelength बुझियला lambda naught ta hochi threshold wavelength nu naught ta hochi threshold frequency clear so threshold wavelength and threshold frequency depend on the metal eta bhalar मन रखिबो कहां पर डिपेंड करूची threshold frequency threshold wavelength that is lambda naught of phi naught कहां पर डिपेंड करूची ना को मेटल हमर यूज होईची सेही मेटल कोन से मेटल वर्क फंक्शन ऊपर डिपेंड करिवो ना से मेटल ऊपर ही हमर डिपेंड करूची so writing phi is equal to h nu naught or phi naught is equal to h nu naught so इथे हम पाई गेले nu naught is equal to phi naught by h तले phi naught केते हबो h nu naught so when phi naught is equal to h nu naught we will get that is maximum kinetic energy k maximum is equal to h nu minus phi naught okay that means h common taking common that is nu minus nu naught okay so k maximum is equal to h nu minus nu naught this formula also you have to remember k maximum is equal to h nu minus nu naught okay clear then so this was the experiments and experimental results found from the experiment hala ame sabu discussion kale now what are the laws of photoelectric emission for that Einstein was awarded with Nobel Prize in 1921 okay so what are the laws of photoelectric emission that Einstein found out what are the laws first law when light of sufficiently small wavelength falls on a metal surface the metal emits electrons the emission is almost instantaneous भलार मन रखियो पिले the emission is almost instantaneous ता माने कोन आमे कहिले तो यदि मोट sufficiently small wavelength किंबा high frequency ड्रो जतबे लाइट ता मेटल सरफेस पर पड़िबो त फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हबो एंड एटा होची प्रोसेस ता ना वेरी इंस्टेंटेनियस माने within some नैनो सेकेंड्स एटा हमर हे जिवो दैट मींस लाइट जस्ट पड़िबो तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हबो फोटोन पड़िबो इलेक्ट्रॉन्स बाहरिबो संगे संगे इंस्टेंट वेरी इंस्टेंटेनियस ओके नंबर 2 देयर इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ lambda naught and a threshold frequency nu naught for a given metal such that if the wavelength of light is more than lambda naught no photoelectric effect takes place देखो lambda जदी greater than हबो lambda naught थारु photoelectric effect emission हबो नाही lambda greater than means nu जदी nu naught to less than हबो ताले photoelectric effect हबो नाही केते बड हबो ज nu should be greater than equal to nu naught और lambda should be less than equal to lambda naught सेते बड जाई photoelectric effect हमरो emission हमरो start हबो ओके
Next, the kinetic energies of the photoelectrons vary from 0 to a maximum of kinetic energy, maximum K maximum, where K maximum is Sc by lambda minus phi naught. So, K maximum vary karibo 0 to from 0 to a maximum value. So, K maximum value kete, that is h nu minus phi naught or phi for taken, right. Nu is C by lambda. So, Hc by lambda minus phi naught. These are all written in the S.C. Verma book, so we can refer that book. Okay. So, next law is the photo current is stopped by applying a negative potential to the anode with respect to the cathode. The minimum magnitude of the potential needed to stop the photo current is called stopping potential. Okay, stopping potential, and it is proportional to the maximum kinetic energy of the photoelectrons. आम एटा पढ़िले तो फोटो करंट आम किए स्टॉप करि परिबो ना स्टॉपिंग पोटेंशियल ही स्टॉप करि परिबो आ सेटा कहा से प्रोपोर्शनल ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से प्रोपोर्शनल बिकॉज़ वी गॉट दैट EV इज इक्वल टू K maximum इज इक्वल टू EV नॉट एटा हम बाहर कले. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज the stopping potential does not depend upon the intensity of the incident light. This means that kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of light. So, kinetic energy is independent. Stopping potential जहाँ kinetic energy से is proportional. Okay. So, kinetic energy ता माने कहाँ पर depend करूनी? I have already said intensity ऊपर depend करू नहीं. तो मन suppose light suppose जेतिक light अच्छी ये लाइट आम पड़ुची काइनेटिक एनर्जी बर्तमान जी अच्छी तुम कह आहरी मु पूरा गोटे हालोजन माने गोटे अधिक लाइट वाला मु लगेबी बर्तमान ताले मु कहबी काइनेटिक एनर्जी अधिक हम इलेक्ट्रॉन्स मानकर नाइ तमाने काइनेटिक एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी ना ना हम सेना वेलोसिटी अधिक हो जिवो ना इंटेंसिटी ऊपर जमा डिपेंड करूनी काइनेटिक एनर्जी ताले कहा पर डिपेंड करछि ओनली फ्रीक्वेंसी ऊपर बुझेला इंटेंसिटी जेते अधिक हो इंटेंसिटी जेते अधिक हेले किछि फरक पड़िबनी किंतु फ्रीक्वेंसी हमर हबा दरकार ठीक से. ओके, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी हेले ही हमर काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो नहल नै एट तमे आराम से बुझी परथिबो काइने K मैक्सिमम इज इक्वल टू h nu माइनस phi naught. देखले एट किछि इंटेंसिटी टर्म अछि कि इज देयर एनी I टर्म हियर I होछि इंटेंसिटी टर्म किछि अछि कि नै टर्म अछि कोडा फ्रीक्वेंसी टर्म अछि फ्रीक्वेंसी माने वेवलेंथ. Okay, so frequency term अच्छी wavelength term अच्छी because it is Sc by lambda. Okay, that means frequency और wavelength ऊपर depend करूँ कि हमारे kinetic energy. Okay, intensity पर depend करूँ नहीं. Next, the stopping potential it depends on the wavelength. Yes, wavelength of the incident light. I have already said wavelength और frequency ऊपर हमारा depend करूँ ची. Okay. Next, the photo current increases with the intensity of the incident radiation increased. बट इंटेंसिटी अधिक हेले कोटा बढ़िबो ना फोटो करंट बढ़िबो एटा तमे कहि परिबो जति की इंटेंसिटी सपोज ई जति की इंटेंसिटी हमर बर्तन लाइट अछि एंड आउ टिके अधिक लाइट हम लगाइबा ताहाले इन फोटो करंट माने बहुत इलेक्ट्रॉन्स बहुत बाहरिबो त माने करंट अधिक होबो बट काइनेटिक एनर्जी अधिक होबनी बुझि परलो कि नहीं. सो फोटो करंट अधिक होबो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड. These are the 7 points, 7 laws of photoelectric emission you should have to remember. Okay, you must have to remember. So next, okay, what is photoelectric effect and wave theory of light? So this is the very conceptual things and we have to understand very clearly. हमको बहुत भला भाବରେ को बुझिया पड़िबो. This is a very concept. Okay, then what is photoelectric effect and what is wave theory of light? Why wave theory of light was discarded? Why wave theory of light cannot explain all the things? Why photoelectric effect comes? Okay, that's thing. That means जदि आमे ए concept को जदि जो photoelectric effect को आमे यदि photon theory हिसाब रे न बुझिगी आमे द wave theory हिसाब रे हमें बुझिबा ताहले कोन होई थांते. When wave theory would be applied to the photoelectric effect, then कोन होई थांदा हम देखिबा. According to wave theory, when light falls on a metal surface, energy is continuously distributed over the surface. All the free electrons at the surface receive light energy. An electron may be ejected only when it acquires energy more than the work function. तमाने कोन
ना जदि आम गोटे सपोज ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा जब आम बुझा सपोज तो गोटे लाइट फोटोन हिसाब आम फोटोनटा न करी गोटे लाइटा पूरा एमती कंटिन्यूअसली पकेबा ताले द एनर्जी जो एनर्जी जमती वाटर वेव्स एमती कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड से भाया भी आम लाइट एनर्जीटा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता बुझीपार कि नहीं आ सबू जाक then all the free electrons at the metal surface receive light energy तो जो मेटाल सबू जाक इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली हम लाइट एनर्जी पाई थांते बुझे कि नहीं सो से पर्टिकुलर गोटे इलेक्ट्रॉन आम कौन जानते जे वार फंक्शन रु अधिक हेले एनर्जी अधिक अधिक एनर्जी हेले ही से मेटाल रु बाहर बुझे कि नहीं ताहले से जदि तार एनर्जी सेतिक अधिक न हो केते बेले अधिक हो जिते सफिशिएंट एनर्जी से पाइबो इलेक्ट्रॉन टा बुझीपार कि नहीं तो से एनर्जी पाइबनी ताले से बाहरी पार कि मेटल सरफेस रु नाई बुझेगा कि नहीं तो से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो कोटा लाइट एनर्जीटा सब इलेक्ट्रॉन्स उपरे समान भाव में ताले गोटे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तो सेतिक एनर्जी पाई परिबनी फ्रॉम टू एस्केप फ्रॉम दैट मेटल सरफेस बुझिपार कि नहीं से जब एनर्जी सेतिक एनर्जी न पाइबो ताले से केमती बाहर बुझे कि नहीं सो ये जिनसा कौन है वेव थ्योरी आमर फेल हो गला सो इफ यू यूज ए लो इंटेंसिटी सोर्स जदि आम पूरा भेरी लो इंटेंसिटी सोर्स माने जदि यूज करवा ताले लो इंटेंसिटी सोर्स माने अल्प इलेक्ट्रॉन्स बाहर बुझेगा कि नहीं यदि अल्प इलेक्ट्रॉन्स बाहर सो जो टाइम डिले collisions and extra energy accumulation in the metal will result no photoelectron emission आ photoelectron emission हबो नाही यदि लो इंटेंसिटी में यूज करबा ताहाले ताहाले टोटली photoelectric emission रो हला नाही according to wave theory बुझेला but the photon theory में नबा so this is contrary to experimental observations आमे जो एक्सपेरिमेंट करछुनी तार तो कंट्राडिक्शन केमती हला no matter how small is the intensity photoelectrons are ejected without any time delay टाइम तो लागिबो नहीं वेरी इंस्टेंटेनियस फोटोन पड़िबो तो इलेक्ट्रॉन बाहरिबो बुझला कि नहीं सो केते जेते स्मॉल इंटेंसिटी पछे हो यदि फ्रीक्वेंसी तार ठीक अछि माने वेरी डिम लाइट हो इंटेंसिटी लो माने कोन वेरी डिम लाइट हे थाउ बट फ्रीक्वेंसी हाई थाउ सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ब्लू लाइट हियर सपोज मु ब्लू लाइट नेबी आ मु रेड लाइट नेबी रेड लाइट रो मोर वेवलेंथ बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी बहुत कम आउटे अछि ब्लू लाइट फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक बुझेला कि नहीं सो ब्लू लाइट रो मने भी सपोज ब्लू लाइट तारो नहीं ब्लू रेड लाइट नमा दरकार नहीं सो ब्लू लाइट ने भी आ तार इंटेंसिटी सपोज इंटेंसिटी मु सपोज 1 वाट ने 1 वाट रो जदी मु ब्लू लाइट ने भी त माने इंटेंसिटी बहुत ही स्मॉल 1 वाट माने बहुत ही स्मॉल इंटेंसिटी हला माने डिम लाइट पूरा हला बट फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जेहेतु हाई अच्छी बढ़िया फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हम पूरा सुंदर भाव में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हम जदि मो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी मो पाखर अच्छी बट इंटेंसिटी लो हो चलो बुझीगला किंतु यदि मो पूरा 100 वाट रो गोटे नहीं 100 वाट रो सपोज मु रेड कलर नेली ता माने मोर पूरा अधिक वाट वाले इंटेंसिटी अधिक अच्छी बट फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक नहीं ताले मोर एमिशन हबो नहीं बुझिया लगे सो नो मैटर हाउ स्मॉल इज द इंटेंसिटी photoelectrons are ejected without any time delay so in the photon theory low intensity means less number of photons and hence less number of electrons get a chance to absorb energy but any fortunate electron on which a photon falls gets the full energy of the photon on the and may come out immediately संगे संगे बाहर जिवो त माने जदी माने सब इलेक्ट्रॉन छडा बाहर बोली मान नै जो इलेक्ट्रॉन्स पूरा जो फॉर्चुनेट केते भाग्यवान इलेक्ट्रॉन्स थिबे केते जण जहा ऊपर फोटोन टा पूरा फुल्ली ता ऊपर पड़िबो आ से इलेक्ट्रॉन पूरा फुल्ली एनर्जेटिक है कि से बाहरिबो बुझिला कि नै एटा हम भल्ला पर बुझी परबा फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट देखो एटा गोटे एनालॉजी करा हैछि दिस इज एनालॉजी बिटवीन द वेव थ्योरी एंड द फोटोन थ्योरी see this is a wave theory this is a wave nature and here a photon theory here wave theory see suppose
in the garden suppose suppose water is spread from a distance on an area containing plants, several plants. Suppose gote plants में गछ लागिछि हम गोटे distance रे पानी spray करूछंती ताले then all plants will get water at a same rate. सबु पानी सबु plants उडा similarly माने सब same rate रे पानी पाइबे बुझिला कि नै तो सबु rate रे पानी पाइबे एटा होछि हमर वेव कांसेप्ट बुझिले कि नहीं किंतु ए पिक्चर रे कोन होउची ए पिक्चर रे कोन होउची सपोज द दिस वाटर इज filled in a this water is filled in a bag that is identical and loosely tied bags water bags. So these are the water bags. So water bags गोटे समस्त समान आउ loosely tied है कि suppose water bags उडा हम जदी आनिबा and a particle physicist, suppose a person who is particle physicist, okay, and who will throw this water bags randomly at the plants. ए गछ ऊपर randomly गोटे गोटे water bag रो पैकेट गोटे फुपाड़िबो ताले कोन हबो ना जो पैकेट ता पूरा से प्लांट ऊपर पड़िबो then the all waters is spread on the plant. सबु जाक वाटर उडा कोन हिजो से पर्टिकुलर प्लांट ऊपर ही सब जाक स्प्रे ही जिवो आ से प्लांट ता भलो बढ़िबो बुझिला कि नै ता माने जदि हमें एमती समान भाव रे पानी देले तो समस्त सेम रेट रे पानी पाइले कि तो पर्टिकुलर गोटे प्लांट को हमको अधिक प्लांट बा अधिक पानी से पाई परिबो नहीं किंतु एठी कोन कले तो वाटर बैग्स हम पकेले पर्टिकुलर गोटे गोटे प्लांट जो वाटर बैग जो प्लांट ऊपर पड़िबो से प्लांट ता पूरा भलो भाव रे पानी पाइबो बुझिला कि नहीं. So this is the photon theory. This is like the energy photons theory. That means जो इलेक्ट्रॉन ऊपर फोटोन टा पूरा पड़िबो h nu पूरा एनर्जी पड़िबो से इलेक्ट्रॉन ही एमिशन हबो बुझिला आउ सब एनर्जी नले एब्जॉर्ब हो जिवो ओके केवल ए इलेक्ट्रॉन ही से बाहर को एमिट है कि रही परिबो. So in the same way whole of the energy associated with a photon is absorbed by a free electron absorbed by a free electron when the photon hits it. Okay, so केवल से इलेक्ट्रॉन ही से बाहर परिबो when the photon hits it. Okay, बुझिला ए कांसेप्ट दैट मींस एक से एक का रिश्ता माने गोटे एच न्यू पड़िबो गोटे फोटोन गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरिबो गोटे फोटोन पड़िबो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरिबो आ गोटे दीटा फोटोन पड़िबो दीटा इलेक्ट्रॉन बाहरिबो बुझिले एक से एक का रिश्ता. So that means आ गोटे कोन हमें वेव थ्योरी हमको बुझी पारलानी that is the maximum kinetic energy of a photoelectron does not depend upon the intensity of the incident ray light. This fact is also not understood by the wave theory. The dependence of the maximum kinetic energy on wavelength is also against the wave theory. There should not be any threshold wavelength according to the wave theory. तामाने इटा भी से भला वेव थ्योरी हमको ए जिंस कथा भी कहि पेलानी जे माने से जिंस भी हमको कहले जे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करू नाही कहा पर डिपेंड करछि ना फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करूछि जेरा के हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सारिचंती. ओके ता माने एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहा पर डिपेंड करूछि देखो आमे संगे संगे गोटे माइंड रे कोन भाबिबा जे लाइट इंटेंसिटी अधिक माने लाइट ता जोर जळुछि ता माने कोन का निहाती पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ा को जोर पूरा आसुथिबे इलेक्ट्रॉन जोर आसुथिबे काइनेटिक एनर्जी पूरा बहुत अधिक होइतिबो ए कांसेप्ट हम दिमाग रे आसी बस टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू photon theory. That means kinetic energy maximum kinetic energy does not depend upon the intensity of light. It depends upon what frequency or wavelength hala बुझी हला. So everything is understood by the photon theory of light. Clear? So this is all about dual nature of radiation हमें बुझी गले. Then हमें dual nature of matter. What is the dual nature of matter? That means what are the matter waves. जदि उठ radiation रो dual nature होई परिबो particle as well as wave जदि हेई परिबो similarly so why not for matters matter रो कहीं जने जोड़े nature रही परिबोनी. That for example electron proton neutron एमानंकर तो inbuilt माने wave nature अछि बुझिला but sorry inbuilt and particle nature electron proton neutron माने एमान सब कोन गोटे particle so सन particle nature अछि but can they behave as wave. So
electrons behave as particles in many of the situations. हम जानते हैं electron particle वाले behave करे, but can electrons also show wave nature in some suitable conditions or situations? Electron wave देखो electron wave और electromagnetic wave पूरा different पिले है ला मन रखो जिनसड़ा. Okay, so you do not be confused between the two. So can electrons also show wave nature? Electrons टा भी माने वेव भले कि मूव करि परिबो कि दैट मींस ए पेन टा गदले मु थ्रो करबी ए पेन टा कि सेंते वेव हे कि जीवो कि बुझिला कि नहीं. आंसर इज यस हे परिबो निश्चित हे परिबो काहे कि नो. दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is built on the basis of the wave properties of electrons. Electron microscope is the basis. Electron microscope द्वारा ही हम जानी परिबा it is on the basis of wave properties of electrons. So if an electron behaves as a wave, then what is its wavelength? कारण wave माने तार wavelength रहइबो, frequency रहइबो, phase रहइबो नै त wavelength केते. This relation was proposed by Prince Louis Victor de Broglie, or we can pronounce as de Broglie भले हम दियो हमें pronounce करि परिबा. Okay, so de Broglie or de Broglie in his PhD thesis, for which he was awarded the Nobel Prize in Physics for 1929 रे से Nobel Prize पाइले. जे एक कथरा से लिखिके कोन लिखिले ना तो wavelength of matter is given by lambda is equal to h by p. Okay, that is de Broglie. This wavelength is called de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength is equal to h by p. What is h? H is Planck's constant, where p is the momentum. P is the momentum of the electron and h is the Planck's constant. And this wavelength is known as the de Broglie wavelength of the electron. It is kahar wavelength na electron wavelength. Same is the case with the other particles such as neutron, proton and molecule etc. ये सब अलग particles मानक पाए भी same lambda is equal to h by p. So the equation also applies to light. When light shows its photon character, each photon has a momentum p is equal to h by lambda. Then why macroscopic objects in our daily life do not show wave like properties? Macroscopic so pen ta हमको कहीं जाना पड़ने से wave बढ़े कि जाऊँ बोली कारण it has more mass कारण तो बहुत mass अधिक देखो lambda is equal to h by p. तो मैंने देखो ए p टा हमें कौन जान चाहिए p is equal to mv mass into velocity. So h by mv lambda is equal to h by mv ना नहीं यदि mass टा जितने अधिक होबो देखो mass जितने अधिक होबो wavelength रा कम होबो ना नहीं यदि mass यार अधिक ये निहाती इलेक्ट्रॉन mass टू कितने गुणा mass यार अधिक ये पेन रा mass तो ये जो मैटर डा कौन जाना पड़िबो हमको वेव लेक जाउची बोली जाना पड़िबो काहे कि when the mass will be increased wavelength will decrease because inversely they are related. So the wavelength decrease होबो wavelength इतने small wavelength को notice करी होबो. Okay, so this is so small wavelength that is cannot be measured. Okay, so सेति पई हमें ऑब्जर्व करि परि नहंती but it is going with a wave like structure. Train ta when train is moving along the track the train ta move करूची so train भी wave like move करूची बुझिला train is behaving also like wave nature is moving with a wave nature. But can you notice कर परिबे कि नहीं train हम straight line नाम कहउछन train रा straight line motion करूची but it is also moving with wave like बुझिला किंतु काहे कि हम नोटिस कर पनंती because train is a very heavy mass and wavelength is very small, so that is cannot be noticeable. Okay, then suppose consider an electron of mass m and charge z accelerated from rest through a potential v. The kinetic energy k of the electron equals to the work done ev on it by the electric field k is equal to ev. Then lambda is equal to what h by p. Okay, then electron रा केते हबो p we know that is k is equal to half mv square. Okay, m divide करो m multiply करो that is m square v square that is equal to p square by 2m. So k is equal to p square by 2m. So p is equal to what 2m k root over and we know that kinetic energy is equal to ev, we know that. So that means also we can write p is equal to 2m ev root over एबे लिखि परिबा. So then lambda is equal to h by p, that means h by 2m k root over we can write this and h by 2m ev root over एमती भी हम लिखि परिबा that is lambda.
आम सब जाक वैल्यू पुट करदे आम इलेक्ट्रॉन केते पाई परिबा दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय रूट v नैनोमीटर ए वैल्यूटा आम इलेक्ट्रॉन पाई परिबा दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस कंप्लीट्स योर second year syllabus that means this is the completes your unit 7 that is dual nature of radiation matter. So thank you so much my dear students and I hope you will do better in the board exam okay. So thank you so much and all the best for your bright future. Thank you. Thank you.